Dear students, Assalamu alaikum. In this module, we shall discuss when two binary structures are isomorphic. Let us consider a binary structure S star to be a set S together with binary operation star on S. Two binary structures S star and S prime star prime are said to be isomorphic if there is a one-to-one correspondence between the elements x and x prime, y and y prime, implies there is a one-to-one correspondence between x star y and x dash star dash y dash. A one-to-one correspondence exists if the sets S and S prime have the same number of elements. Now we shall discuss formal definition of isomorphic binary structures. Let S star and S prime star prime be binary algebraic structures. An isomorphism of S with S prime is a one-to-one function phi mapping S onto S prime such that the following condition is satisfied. Phi x star y equal to phi x star prime phi y for every xy in S. You can see that x और y जो elements हैं वो set S को belong कर रहे हैं और phi x, phi y, x और y की images हैं जो कि set S prime को belong कर रहे हैं और input के अंदर आप देख सकते हैं कि x, y के दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन हमने यूज़ किया है वो स्टार है और इमेजेस के दरमियान जो हमने बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया है वो स्टार प्राइम है जो कि एस प्राइम का बाइनरी ऑपरेशन है और इस कंडीशन को हम होमोमॉर्फिज्म कंडीशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कब टू बाइनरी स्ट्रक्चर्स आइसोमॉर्फिक होंगे। हम इसको 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप 1, define the function phi that gives the isomorphism of S and S prime. In second step, we shall show that phi is one-to-one. In third step, we have to prove phi is onto S prime. And in step 4, we shall show that the homomorphism condition phi x star y equal to phi x star prime phi y for every xy in S. Now we consider an example. We show that the binary structure R plus is isomorphic to the binary structure R plus under multiplication. Here R plus is the positive real numbers and R is the set of all real numbers. अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक मैप ऐसी डिफाइन करें जो कि R से R प्लस के अंदर हो। तो फौरन आपके माइंड में आएगा कि एक्सपोनेंशियल मैप एक ऐसी मैप है जो कि आपको R से R प्लस के अंदर ले जाएगी। सो वी डिफाइन फाई फ्रॉम R to R plus by phi x equal to e raised to power x. Now in step 2 we have to show that phi is one-to-one. To prove the condition of one-to-one, we take images of two elements x, y in R. The image of x will be phi x and image of y will be phi y. हम इन्हें इक्वेट कर लेते हैं। phi x equal to phi y implies ex equal to ey क्योंकि हमने अपनी मैप को डिफाइन किया है phi x equal to ex. दोनों साइड्स पे आप लॉग अप्लाई कर दें तो हमारे पास x equal to y आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल हैं, देयरफॉर phi is one-to-one. अब हम प्रूव करते हैं कि phi ऑन टू फंक्शन है। तो phi को ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको R प्लस के अंदर से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक करना होगा। सो वी सपोज दैट R बिलोंग्स टू R प्लस which is set of positive real numbers. Then log R will be in
set of real numbers and we take image of log r under phi, and by definition we shall get E log r, which is equal to r. So we have proved that हर एलिमेंट जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है उसकी प्री इमेज लॉग आर है. इट मीन्स दैट phi is onto. At the end, we have to show that phi is a homomorphism. So we take two elements x, y in R, and in R the binary operation is given by usual addition. So we take image of x plus y under the map phi. We shall get ex plus y, which is equal to ex into ey. तो हम अपनी डेफिनेशन को रिवर्स ऑर्डर में यूज करते हैं, तो हमारे पास ex phi x के इक्वल आ जाएगा और ey phi y के इक्वल आ जाएगा. Therefore, which is equal to phi x into phi y for all x y in R. Therefore, the condition of homomorphism is satisfied. और हमने प्रूव कर दिया कि दो बाइनरी स्ट्रक्चर्स R प्लस और R प्लस डॉट आर आइसोमॉर्फिक.